Epiphora, in presence of patent lacrimal pathway, is still an enigma. It is mainly due to partial nasolacrimal duct obstruction or impaired lacrimal pump. This gentleman with main complaint of watering was not offered any special treatment because his syringing was patent. Lacrimal syringing generates a pressure of 177 plus minus 96 psi with the help of 3 mm syringe. Any pressure more than 100 psi is supposed to be very high. Now this real-time lacrimal irrigation video is showing the flow of dye through the nasolacrimal duct, and just watch the pressure at which dye is squirting in inferior matters. This high pressure is capable of negotiating partial nasolacrimal duct obstruction, giving us a false impression of patency. And this is even more true for the cases of trauma. Most of the dacrologists are of opinion that presently we don't have any test which can reliably differentiate between impaired lacrimal pump and partial nasolacrimal duct obstruction. CBCT-DCG, our technique, we published in 2019, and the aim of present study is to see whether CBCT-DCG is capable of differentiating between the impaired lacrimal pump and partial nasolacrimal duct obstruction. In our technique, dye is instilled in conjunctival cul-de-sac. I repeat, dye is instilled in conjunctival cul-de-sac. Patients remain seated upright, normally blinking. Images are taken at 3, 6 and if needed 15 minutes. Imaging gets completed within 13 seconds, making the process very safe. In asymptomatic eyes, dye instilled in conjunctival cul-de-sac reached in inferior meatus within 1 to 3 minutes. This stitched video is showing the progression of dye through NLD. As with any other CT imaging system, CBCT-DCG does provide coronal section, axial, sagittal and reconstructed 3D view. It gives excellent anatomical details with topographical data, making this tool immensely useful. CBCT-DCG provides excellent anatomical details of lateral wall of nasal cavity, which is very important for nasal DCR. This young girl, 6-year-old, revealed delayed FDDT. DCG at 3 minutes revealed pooling of dye in sac and nasolacrimal duct, indicating that there is a stricture at the tip of NLD. Fluorescein dye test cannot localize the site of obstruction. Scintigraphy does it very poorly. CBCT-DCG has the capability to pinpointedly localize the site of obstruction. Lacrimal scintigraphy and CBCT-DCG both have the ability to assess the lacrimal pump. And both these techniques suggest that dye reaching lacrimal sac and upper part of NLD within 3 minutes is an indication of normally working lacrimal pump. This young man delayed FDDT. DCG at 3 minutes revealed dye in sac and upper part of NLD, indicating normal working pump. Grossly delayed FDDT. DCG at 10 minutes revealed only traces of dye in sac area, indicating pump is impaired. A case of lid laxity. Again DCG gave the answer that the lacrimal pump is impaired. Back to our original case, fluorescein dye disappearance test revealed both side obstructed pathway.
DCG at 15 minutes revealed obstruction, partial obstruction in lower part of NLD. And when we injected a dye, it was patent, and the cause of obstruction was dacrylith, a treatable cause. Lacrimal scintigraphy is of very limited value because of poor anatomical details and poor agreement with FDDT. At times it gives fallacious result. And CBCT DCG mimics the physiological lacrimal outflow pathway. Because of that, it is able to differentiate between lacrimal pump and partial nasolacrimal duct obstruction. Thank you. Thank you, sir. Everyone is adhering to time limit except for the first presentation. That's a good thing. Questions? How you measure the pressure in the system? No, I have not measured. This is a published data. सर एक पेशेंट में जिसमें आपने बोला था ना वो है लैक्सिटी है फोटो दिखा Lid laxity. लिड लैक्सिटी है दैट पेशेंट हैज एक्ट्रोपियन पंक्ता तो इवर्टेड दिख रहे थे उसमें नहीं lid laxity है, lid laxity है. हाँ, yes, I can show you. Once you pulled it, I have photographed it. नहीं सर जो स्लाइड में फोटो है लगाओ भाई. बता दिया उसने नहीं सर ये पहले वाला previous. पहले वाला सर हाँ ये. हाँ जी ये वाला इसमें तो एक्ट्रोपियन दिख रहा है नहीं ectropion. Actually, what I am trying to tell you, it is not ectropion. I was just trying to show the lid is relaxed. अच्छा ये फोटो हाँ, के टाइम I pulled the lid. जी हाँ. सर सो इसमें अभी आपके स्टडी से इफ वी वांट टू टेक अ क्लिनिकल डिसीजन कौन से केसेस है जिसमें आप एडवाइस करेंगे वी शुड गो फॉर दिस इन्वेस्टिगेशन अगर ओपीडी में हम देख रहे हैं व्हिच आर द केसेस वेयर वी शुड यूज दिस Thank you. Very good question. If the fluorescein dye test, disappearance dye test, is delayed, it is an indication for CBCT DCG. सर इसमें फ्लोरोसेंट डाई डिसअपीयरेंस टेस्ट नॉर्मली वी टेक 5 मिनट्स एज अ स्टैंडर्ड ऑल पब्लिकेशंस आर 5 Yeah. आपने कहीं पे 10 मेंशन नहीं कहीं पे 10 नहीं. एक पे आपने हाँ, I will tell you. Yes. आर यू फॉलोइंग द सेम आप एफडीडीटी के लिए कितने मिनट्स फॉलो करते हैं See, fluorescein dye disappearance test at 5 minutes. जी सर We have seen with CBCT DCG that at 5 minutes it includes cases of delayed patency. We have checked it 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. We have done CBCT DCG 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. And we have found if we do fluorescein dye disappearance test at 3 minutes, it gives the most accurate result. तो आपने मॉडिफाई किया आप 3 Yes, I have done जी it. सर और सर एक फर्स्ट या सेकंड पेशेंट था जिसमें आपका स्ट्रक्चर था हाँ, तो उस पेशेंट में अगर एफडीडीटी डिलेड है और आप अगर साथ में हम एफडीटी के सिरिंजिंग करते हैं तो उसमें तो हमें सिरिंजिंग पेटेंट है. जितने भी पेशेंट स्ट्रक्चर वाले में तो नहीं पेटेंट होगी सर नहीं पेटेंट है. सिरिंजिंग पेटेंट है. मैंने इसमें कोई भी केस जो भी केसेस हैं जी इन सारे के सारे केसेस में सिरिंजिंग पेटेंट है. और इसमें 3 मिनट पे ये स्टेटस था और जब 3 मिनट पे हम लोगों ने डीसीजी किया सीबीसीटी डीसीजी तो ये स्टेटस था. और ये एग्रीमेंट जो है हर केस में आपको मिल जाएगा. जितने भी हमने केसेस दिखाए हैं. यस. इसमें तो सिरिंजिंग पेटेंट होना नहीं चाहिए नहीं एफडीडीटी इज शोइंग. एफडीडीटी इज शोइंग. नहीं सर अगर हम जितना मेरा है एफडीडीटी इज नॉट टेकन अलोन वी ऑलवेज कंबाइन इट विद एन एनाटॉमिकल मेजर सो एफडीडीटी फंक्शनल हो गया एनाटॉमिकली आप सिरिंजिंग से करके देन वी गो ऑन टू तो ये तो एक बेसिक लैक्राइमल इवैल्यूएशन का है राइट और रॉन्ग इज द नेक्स्ट क्वेश्चन बट दैट्स अ बेसिक सो अगर हम एफडीटी करेंगे
It will also be along with syringing, and then we go for the further evaluation. वही चीज़ मैंने शुरू में आपको दिखाई कि जो सिरिंजिंग है उसका प्रेशर कितना ज़्यादा है। जो मैंने आपको स्लो मोशन में वीडियो दिखाया है उसको मैंने 90% स्लो किया है। देन यू कुड सी, मतलब आई कुड मेक इट कि पीपल कैन सी इट, अदरवाइज फुल से जाता है। आपका वो वीडियो बहुत अच्छा लगा मुझे, इनफैक्ट दैट्स द बेस्ट पार्ट इन दिस प्रेजेंटेशन। बहुत अच्छा लगा वीडियो, बट उसमें क्या है कि हम तो वो जो, हाँ सॉरी, मैं उस वीडियो को डिबेट नहीं कर रहा हूँ आपसे, तभी सर ने प्रेशर का भी क्वेश्चन पूछा। अगर एक कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है ड्रेनेज सिस्टम में तो वहाँ प्रेशर इमेटेरियल हो जाएगा। प्रेशर ओनली विल फंक्शन व्हेन देयर इज अ पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, उसको वो खोल देगा। तो अगर जैसा ये वाला पेशेंट है जहाँ पर कंप्लीट स्ट्रक्चर है, वहाँ कंप्लीट स्ट्रक्चर मीन्स स्ट्रक्चर may be incomplete, because I know this patient, we have done the syringing, but we have included only those patients where the syringing was patent. सर तो अगर हम मटेरियल मेथड की बात करें तो आपके मटेरियल मेथड में एफडीडीटी एट 3 मिनट्स प्लस सिरिंजिंग आएगा फॉर ऑल पेशेंट्स, फॉलोड बाय पेटेंट हमने तभी लिया है। जी सर, जो टॉपिक है हमारा वो पेटेंट लैक्राइमल पाथवे है ही। नहीं मैं वही कंफर्म कर रहा था, पेटेंसी इज डिफाइंड ओनली ऑन एफडीडीटी और No, सिरिंजिंग और बोथ। no, I was just trying to कि there is a good agreement between FDDT and CBCT DCG.